हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड एग डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है वर्ल्ड एग डे है, तो वर्ल्ड एग डे जो है इस्टेब्लिश किया था आईईसी इंटरनेशनल एग कमीशन में वेना इन 1996 conference when it was decided to celebrate World Egg Day on the second Friday in October each year। इस वीडियो में जो है आपको पूरी फैक्ट्स वगैरह सब कुछ बता देंगे, थीम वगैरह। इसके बाद आप ये नहीं कह सकते इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो थीम क्या है 2020 की? ईट योर एग टुडे एंड एवरी डे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड एग डे के बारे में। जो ये वीडियो है वो बहुत औसम है, एंड तक ज़रूर देखें। तो फर्स्ट है, नॉर्मल थिकनेस ऑफ द चिकन शेल वेरीज फ्रॉम 2.02 to 2.03 millimeter. Chicken egg yolk comprises of 30 to 33% of egg weight. Adult egg is also called white rot. तो ये 3 points हो गए कंप्लीट। फिर फोर्थ पॉइंट है, चीफ ऑर्गेनिक मैटर इन एग शेल इज कैल्शियम। फिफ्थ है, हॉफ unit is the expression of related egg weight and height of the thick albumin. Technique for measuring vitelline membrane strength was developed by Fron and Metron. Beta ray backscattering device is used to estimate shell thickness. फिर 8 है, एग है हाई प्रोटीन वैल्यू, आप जानते हैं। 9th है, कंज्यूमर मोस्टली प्रीफर वाइट शेल एग एट ग्लोबल लेवल। 10th है, लेटेब्रा कीप्स द जर्मिनल डिस्क फ्लोटिंग अपराइट। 11th है, एरोकेना चिकन ब्रीड lay bluish green shelled egg। 12th है, as per the age laying hen increases the its shell strength decreases। फिर ड्यूरिंग स्टोरेज द pH of egg albumin increases। फिर 14 ग्लोसिपॉल एंड cyclopropanoid fatty acids are responsible for pink albumin and brown yolk discoloration of egg। 15 है, pidan is mostly prepared from duck egg। 16 है, the egg protein that denature at the low temperature conalbumin। 17 है, gram positive bacteria dominate eggshell flora। Triglycerides from egg yolk are more detrimental to albumin foam। 19 in hard cooked egg, the greenish black discoloration on yolk surface is common on chick egg। 20 duck egg species egg is used to obtain a better yield of rabies virus for the preparation of the inactivated non-neural rabies vaccine। 21 ovo inhibitor is serine protease inhibitor। 22 black rot type 2 disease is due to Pseudomonas putida। 23 the most abundant mineral found in egg yolk is phosphorus। 24 the least changeable nutrients in egg are minerals। 25 the topmost countries in egg production are China, then USA, then India, then Mexico, then Japan। 23 the controlled bacterial fermentation is commonly used albumin desugaring method during egg powder preparation। National Egg Coordination Committee start declaring the egg price since 1982। The topmost state in which India produce large egg production are Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, Maharashtra। फिर India is the major exporter of white shelled egg to Oman and Dubai countries। Mr. Suresh Chituri is the chairman of International Egg Commission। 32 International Egg Commission was formed in 1964। 33 the logo of World Egg Day contains 8 egg। 34 chicken egg contains 6 gram protein and 14 essential nutrients। 35 choline, an egg nutrient, is essential for fetal brain development। Egg drop syndrome 1976 के बाद है, इट इज़ characterized by thin shelled egg या फिर shellless egg होते थे। It transmitted through horizontal as well as vertical। The virus grows in better in ducks and goose eggs। Brown egg layer less affected by white layer egg। 37 Andhra Pradesh is the first state which include eggs in the midday meal scheme। 38 states B is a genetic marker can be used as a for egg laying performances। Outer shell membrane is 3 times thicker than inner shell membrane। 40 the brown coloration of eggshell is due to ophiolin pigments। 41 egg contains vitamin A, vitamin B, vitamin D and devoid of vitamin C। For 42 there is no correlation between the number of ova hen carries and the number of egg laid। 43 lecithin and cholesterol ratio in fresh chicken egg yolk is 8.7:1। Pullet eggs contain a large proportion of yolk and smaller proportion of albumin। 45 distorted shell condition is due to Salmonellosis
infectious bronchitis and mycoplasmosis. 46 albumin part of egg protects embryo from temperature fluctuations. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जो है बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।